हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं HPSC PGD का एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैंने सबके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, ऑब्वियसली मेरे लिए भी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हम बात करने वाले हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारी अमेरिकन लिटरेचर के अंदर आता है। इसमें हमारे तीन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। रीजनलिस्ट था वो नहीं था, पोइट ऑफ नेचर, एंड हिज पोइट्री बिगन्स इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। उसकी जो पोइट्री है ऑफ डिस्कस अ पोइट्री ऑफ एनिग्मेटिक एपिग्रामेटिक एंड ही वॉज अ मॉडर्न पोइट। चलो शैल वी स्टार्ट। ओके, पहले हम थोड़ा रॉबर्ट के बारे में पढ़ते हैं, फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे सारी पोइट्री वन बाय वन। ओके, उसका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, परहैप्स द बेस्ट लव्ड ऑफ अमेरिकन पोइट्स, born in San Francisco. But he spent a last part of his life in the farm country of New England. That was a region of USA with which his poetry is identified. Frost poetry celebrates the countryside of New Hampshire. The local color of New England is seen in the setting and environment of his poetry, his poems. Most of scenes in Frost poetry are led in New England farms, orchards, forest, mountains, pastures, spring cottages, etc. As he is a regional poet as well as a nature poet. From Theocritus to Virgil, from Chaucer to Wordsworth, Emerson to Frost, every poet seems to set communication between the self and nature. When he said, देखो quotations भी बहुत important होती हैं. Nature took the pen from hand and wrote for me. For kids, nature was sensuous beauty. For Shelley, intellectual nature. Objects such as drooping birches tree and an old stone drew universal significance from the experience of a farmer or a country boy. Most of his poems have a New England setting and deal with the theme of man's relationship with nature. In the analysis of Robert Frost, the road not taken, tree, ये कुछ poems हैं. Road not taken, tree at my window, two tramps in the mud, and stopping by woods on a snowy evening. We can pick out specific example to illustrate Frost's overall use of nature, sometimes setting of reason to finds here mention. The woods are lovely, dark and deep. आप सब जानते हैं ये जो लाइन्स हैं स्टॉपिंग बाय वुड्स की हैं, और ये जो पोएम थी ये नेहरू जी की फेवरेट पोएम थी. इन बर्चेस, एप्पल ट्रीज, स्नो, स्टॉर्म, टू ऑफन इन द सीन्स, द ऑनसेट mark the advent of long winter. The faint whisper of the season, first snow on the dry grass, is a characteristic sound in New England. The hissing sound is not heard again throughout the winter. Here he also drew the terrifying aspect of nature. Winter is long and hard. For the people in New England, the appearance of sun or blowing of the cold wind can disturb the weather in May or March. ये देखिए कोटेशन मैंने बीच में दी है ताकि आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए. ऑल गो डाउन द हिल इन वाटर ऑफ स्लेंडर अप्रैल रिल. और एक और कोटेशन बनती है इसमें, दैट फ्लैश इज टेल थ्रू लास्ट ईयर विदर्ड ब्रेक एंड डेड विड्स लाइक डिसअपेयरिंग स्नेक. तारीफ़ की है कैसे, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इसने बड़ा पर्सोनीफाई भी किया है थिंग्स को, है ना, टेल वेल डिसअपेयरिंग स्नेक वगैरह के साथ में. In spring or winter season, the farmers are busy in their vocation of planting, harvesting, plowing, picking apple, etc. Frost communicates the experience of a farmer realistically. Poems like Birches, After Apple Picking. Some other poems give a precise description of the region of New England. And Birches is a cotton example of New England. Cotham example. I don't know what is it. In birches, he aptly described the beauty of birches covered with snow. See, when I see birches bent left or right across the lines of straightener, darker trees, I like to think some boys been swing them, but swinging doesn't bend them down to stay as ice cream storms do. Wow. अब देखिए यहाँ पे एज लाइक जहाँ पे लगता है आपको पता ही है वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे सिमली होती है. जहाँ डायरेक्ट कंपेरिजन है वहाँ मेटाफर होता है. फ्रॉस्ट गेव अ विविड एंड पिकारेस्क डिस्क्रिप्शन ऑफ बर्चेस. द स्विंगिंग बॉयज डज नॉट हार्म द बर्चेस एज आइस स्ट्रॉम डू. द ब्यूटी ऑफ बर्चेस एंड पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन आर नॉट टू बी फाउंड एल्सवेयर. फ्रॉस्ट सेज, क्या कहता है, ऑफन यू मस्ट हैव सीन दैम लोडिंग विद
a sunny winter morning after a rain. Such heaps of broken glass to sweep away. Through all the playful activity of swinging by a boy, he gets reminiscent of his boyhood, when he himself was a swinger of birches. He wants to swing when life is too much like a pathless wood. ऐसे भी कहता है, life is too much like a pathless wood. He shows his frustration also as he wants to get away from earth, where your face burns and tickles with a cobweb. Tickles क्या होता है? गुदगुदी होना, irritation होना. Broken across it, and one eye is weeping. In other words, he shows the terrible aspect of nature, though he seems to be fed up with the life on earth. Next, yet he doesn't want to leave earth forever when he says, earth is the right place for love. I don't know where it's likely to go better. एक कोई क्रिटिक हैं लोनल ट्रेलिंग, उन्होंने बोला है, फ्रॉस्ट अ टेरिफाइंग पोएट. His poem describes a terrifying universe. I don't know why he said so. Provide is a philosophical poem where he advised the people. Die early and avoid the fate. कितनी अच्छी बात कही कि जल्दी मर जाओ यार, क्यों भोगना है, क्या होगा आगे लाइफ में. This poem convey the idea that in a state of prosperity is good time to die because at this time people recall you more. क्या कह रहे हैं कि ऐसे टाइम में मर जाओ जब आपका अच्छा टाइम चल रहा हो, नहीं तो फिर बाद में लोग आपको ज़्यादा याद नहीं रखते हैं. आफ्टर डिफीट एंड इन ओल्ड एज डेथ गेव लॉस्टनेस एंड पीपल फॉरगेट अस. इन प्रेफिस द फिगर अ पोएम मेकर टू द enlarged edition of collected poems, Frost contend that poetry just a minute guys begins in delight and ends in wisdom. ठीक है ना, जैसे हम सब बोलते हैं कि इनके ना 2 मीनिंग्स हैं, अपर लेवल पे अलग मीनिंग है, ठीक है, और डीप लेवल पे अलग मीनिंग. आपको ना रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ता है. ओके, द फर्स्ट स्ट्राइकिंग थिंग ऑफ फ्रॉस्ट पोएट्री इज इट्स क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी. सिंपल सी होती है पोएम बट एक डीपर मीनिंग होता है इसके अंदर. Unlike T.S. Eliot and other modern writers, Frost does not puzzle the readers with ambiguity and allusions. He delicately mixed moral dose of wisdom with delightful beginning. His poems start in a cheerful beginning and in the ending he gave us an idea of wisdom. Yeah, that's true. यानी कि हमारा एक क्वेश्चन कवर हो चुका है. नेक्स्ट, Frost poem have suggestiveness. He suggests all without telling us. For example, mending wall. It is about different attitude to the same question held by two neighbors. It is about two contradictory statement. अलग अलग statement है, दो neighbors हैं इस poem में. The farmer feels that there is no necessity of wall between him and his neighbor. अब देखो एक पड़ोसी तो ये कहता है, there where it is we do not need a wall. He is alpine and I am apple orchard. My apple tree we never get across and eat the cones under the pines. I tell him the farmer is of the view that. तो ये उसके व्यू है, वो नहीं चाहता कि मतलब देखो अलग अलग उनके ट्रीज हैं तो कोई कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं उठता. फिर आगे देखो, तो क्या व्यू है फिर, समथिंग देर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल, कि यहाँ कुछ तो है जिसको पसंद नहीं है दीवार. दैट मीन्स हमारे लोकल लोग में कहते हैं कि राड से बाड़ अच्छी है, ये वही वाली बात है, फेंसेस. दैट मीन्स नेचर डज नॉट लाइक वॉलिंग, वॉल उसको पसंद नहीं है. हिज व्यू रिप्रेजेंट फुल लिबर्टी एंड नो सेपरेशन और डिविजन. बट इन द सेकंड, जो सेकंड फार्मर है, रिमेन स्टबर्नली कन्विंस्ड, जिद्दी है काफ़ी, कन्विंस करके रहे. गुड फेंस मेक गुड नेबर, सिंबल ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन है कहीं ना कहीं ये. This is a poem about two England farmers confronting a problem. But looking deeper, one finds that poem states one of the greatest problems of our life. Frost is symbolically asking whether wall of nations should be made stronger for our protection or whether they should be removed since they hinder man's progress. This poem may show a fine analogy of the conflict between traditional adherence and modern undercurrent of important रिवॉल्ट. राइट, आई होप आपको ये अच्छी लग रही हो. अब हम पोएम में से कोई पोएम में से क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे, देखिए. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग,
पोएम कैरी बोथ डिलाइट एंड विजडम, ऑब्वियस सी बात है. दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेवलर्स सोलीलोकी. सोलीलोकी क्या होता है? वो इंसान जब जो खुद से ही बातें करता है उसको बोलते हैं सोलीलोकी. सोल से बना है और लोकी क्या होता है? लोगस, मतलब बोलना. Okay, this poem is in the form of a traveler's soliloquy. While he stay briefly to enjoy the beauty of the woods covered with snow, thus poem begins in delightful manner. He stops to watch the beauty, his charm in the woods, while his horse think it's a strange thing to stop without a फार्म हाउस नियर, कि कोई फार्म हाउस भी नहीं है. उसका घोड़ा सोच रहा है कि फिर मालिक क्यों रुके हैं. द हॉर्स गिव्स हिज हार्नेस बेल टू शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक. हॉर्स ने क्या किया? अपना बेल हिलाई है और कहा है कि भाई क्या कोई दिक्कत तो नहीं है. दिस पोएम इज एन अकाउंट ऑफ द ब्यूटी ऑफ वुड्स, स्नो, विंड, लेक, हॉर्स एंड इट्स साइकोलॉजी एंड डार्क इवनिंग. द वुड्स इन द पोएम आर सिंबल ऑफ रेस्ट, enjoyment and leisure in life. Even the deeper level, the woods signify life itself, but the poet is soon reminded of his duty and promised to move on and not to rest. The ending stanza is quite remarkable in its suggestiveness. The woods are lovely, dark, and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Here, life is spoken of as a journey of a traveler. The words such as journey, woods, promise, miles, sleep add a dimension of more than one possible meaning, right? We have miles to travel before we yield to the final and inevitable commitment. Sleep's death. Main strength of the poem is the multiplicity of the meaning, right? स्लीप का मतलब डेथ भी तो है ना. नेक्स्ट पोएम है हमारी टू ट्रम्स इन मड टाइम. मड टाइम का मतलब है कि बारिश, रेनी सीजन. Opens in a casual way where two tramps appear while poet is splitting wood in the yards. The poem give a beautiful description of the season of the year. कोई काट रहा है लकड़ियाँ, ठीक है. फिर देखते हैं पोएट इसको मिला है. The sun was warm but the wind was chill. देखिए कितना अच्छा इसने वर्ड्स डाले हुए हैं इसमें. You know how it is with as April day when the sun is out and the wind is still शांत. You are 1 month on in the middle of March. The poet was doing the work only for entertainment, but the tramp seems to say that they have better claim to the work. But the poet comes out with a deep note of wisdom and brings about a resolution at the end of the poem. क्या क्या conclude किया poet ने? My object is living to unite. Living is to unite. My avocation and my vocation, as my two eyes make one insight, only where love and need are one, and the work is play for mortal stakes. Is the deed ever really done for heaven and the future's shake? The poem is a delightful picture by Frost which combines pleasure with need. Thus, a personal experience has been used to highlight some universal truth. Birds, flowers, trees appeals to us. Love of nature, natural beauty and conflict go side by side. According to Cecil de Lewis about the poem Birches, he said, this is a poem in which realism and fancy, the light and serious tone are perfectly blended. इसमें जो लाइट और सीरियस टोन है वो अच्छे से मिक्स की गई है. बस फिनिश होने वाला है. हाँ जी. He has a phenomenal quality of telling something wise and sagacious. सेज से बनाए, सेज होता है ना, सेज साधु संत. तो एक विट्टीनेस है, एक वाइजनेस है इसके अंदर. इन अ शॉर्ट एंड अम्यूजिंग वे, फनी वे. Through his suggestiveness, imagery, forceful description, delightful and playful atmosphere, symbolist technique, deep philosophy of life are judiciously blended together as a step of fuller understanding of life. After Apple Picking is a beautiful poem about winter season. The setting of the poem is in New England. He tried to prove the fact that regional poetry of Frost was first appreciated in England, not in America. This poem describes the experience of apple picking, where poet has been working throughout the day on a long pointed ladder. He tried and is most of apple picking any further, he said, for I have had too much of apple picking. मैं पक चुका हूँ.
I'm overtired for the great harvest I myself desired. Through this poem, he shows difference between liking and work. At first, he just loved this activity. He dreamt about it, and I could tell what form my dreaming was about to take. Magnified apples appear and disappear. But now he fed up and said, "But I am done with apple picking now." The language of this poem is very simple and belong to rural life. The Rono Taken is a poem, an autumn season. Poem start with delight and wisdom. The poet is confused and said, "Two road drivers in a yellow wood, and sorry, I could not travel both." But finally, he chose one way. I took the less traveled by, and that has made all the difference. And be one traveler. Long I stood and looked down as one as far as I could. At the moment of choice, the poet was of view that the choice was important. He could somebody himself. He took the lines. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो. मैंने ट्राई किया कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से बनते हैं वो हम करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय.